Hi friends, welcome to my YouTube channel Make Guru. Subscribe to my channel, like to my videos and don't forget to press the bell icon. Good morning students. Today we will going through the topic crank and slotted lever quick return motion mechanism. ओके सो पहले हम इसकी डायग्राम देखेंगे, उसका फॉर्मूलेशन देखेंगे एंड आफ्टरवर्ड्स हम इस पे न्यूमेरिकल भी लेंगे. तो चलते हैं. सो दिस इज द क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म. So this is the diagram for it. See, in this diagram, it is not too much complicated diagram. This link AC is one of the fixed link. Link 3, link AC is a fixed link. This hatching line indicates that this link is fixed. This CB1, CB2 and this CB is one type of crank linked to cranks having the 360-degree rotation. It will rotate. Slider link 1. This point B is a slider which is slides along this bar AB. Slotted bar. This AP is a slotted bar which is slotted at point B. This point B slides along this bar, AP bar. Okay. Now, and this point P is oscillates. This dotted line indicates that this link AP is oscillates about P1 to P2. Okay. Link PR, it is called as one type of connecting rod which is connected to the ram. Okay, on ram there is a cutting tool is mounted. Here it is the cutting tool is mounted. This type of mechanism is mainly in shaper machine, slotting machine and also various types of machine. Ram having the cutting tool. This R1 R2 is a line stroke. Okay, so this ram oscillates. The ram gets reciprocates from R1 to R2. This forward stroke is a cutting stroke and the return stroke, quick return of the ram is a return stroke. R1 to R2 is the line of stroke, connecting rod. Okay, this is all about this diagram. Now these are the formulations of these crank and slotted lever quick return motion mechanism. Here we have formula time of cutting stroke to the time of return stroke, beta upon alpha. Okay, so in this diagram we will see that this is the beta angle. Crank having 360-degree rotation, so it is divided into angle beta and this half portion is the angle alpha. See, now in this diagram we will see there are the two triangles ACB1, ACB2. These are the two triangles. So this whole angle is alpha. ये जो पूरा एंगल है वो अल्फा है. अभी आप इसे डिवाइड करते हैं तो ये हाफ कितना हो जाएगा. सी हमने शॉर्ट में सिंप्लीफाई इसे यहाँ किया है. ये जो हाफ एंगल है, हाफ पोर्शन, दिस इज ट्रायंगल ACB1. हाफ जो पोर्शन है वो है अल्फा बाय 2. इसका हाफ अल्फा बाय 2 एंगल. दिस इज द 90-degree angle. So remaining angle will be, because the triangle having all three angles having the value of 180-degree. Okay, so this is alpha by 2, this is 90, so remaining will be, this is 90, so remaining will be 90 minus alpha by 2. So this angle is 90 minus alpha by 2 and this remaining angle will be also 90 minus alpha by 2. But we are thinking about this triangle only, ACB1. Both these triangles are similar triangles. Okay, so beta upon alpha, time of cutting stroke to the time of return stroke. This beta upon this alpha. So
beta upon alpha. How much will be alpha angle? Because whole is a 360 degree angle. So alpha angle will be written as 360 minus beta. This alpha angle will be 360 minus this beta. So we can say that, or we can write down this beta angle also. Beta angle will be 360 minus alpha upon alpha. Okay. Now the tool travels from distance R1 R2 during the cutting and return stroke, length of stroke. Okay, this ram gets reciprocates from R1 to R2 during the cutting stroke and also in return stroke. So we can say that this R1 R2 is nothing but it is the length of stroke. So R1 R2 is equal to P1 P2. See, R1 R2 is equal to P1 P2. Same line of action, same line of stroke. That's why P1 P2 is equal to twice of P1 Q. See, this is the Q, P1 Q, and these both, it is right angle here. It is divided into this link AC extended. Divide this P1 P2 into two equal lines. That is P1 Q and P1 Q. That's why it is a twice of P1 Q. Twice of P1 Q, because P1 Q is equal to P2 Q. P1 Q is equal to P2 Q. That's why we can say that twice of AP1. Okay, twice of AP1 sine of P1 AQ. See, twice of AP1. AP1. Okay, sine of P1Q. See how these terms came. So we have formula sine of, if you have taken the sine of angle P1 AQ is equal to sine of P1 AQ is nothing but, what is sine angle? Is the means front side upon hypotenuse. So it is, if you have taken this angle, sine of P1 AQ, P1 AQ, then front side is this, that is P1Q upon hypotenuse. So this is the 90 degree angle. So this is the hypotenuse. So it will be AP1. Okay, so these two, if you have written this term as P1Q, then this AP1 will be here. So AP1 sine of P1Q is AP1. So P1Q will be twice of AP1 sine of. So this term will be come from here. Just we have simply applied the sine of theta is equal to front side upon hypotenuse. Okay. Now this twice of AP1 sine of, see, now this angle P1 AQ, angle P1 AQ is nothing but, it is sine of, sine of P1Q is equal to 90 minus alpha by 2. See, P1 AQ, nothing but it is the this angle. So this angle value will be 90 माइनस अल्फा बाई 2. इसका जो वैल्यू है वो 90 माइनस अल्फा बाई 2 है. सिंपली आपको ये यहाँ पे पुट कर देना है. सिंपली ये यहाँ पे इससे रिप्लेस हो जाएगा. सो इट विल बी साइन ऑफ 90 माइनस अल्फा बाई 2. तो अभी आपको सिंपली मैथमेटिक्स में पता है कि साइन ऑफ 90 प्लस 90 माइनस थीटा इज नथिंग बट इट इज द कॉस थीटा. ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन आपको यूज करना है. ट्रिग्नोमेट्रिक सिंपल, इट इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस. सो इट विल बी ट्वाइस ऑफ AP cos of alpha by 2. This 90 minus alpha by 2 will be replaced by cos of alpha by 2. Now this AP1 is equal to AP. See, AP1 and AP, because it has same
रेडियस टाइप, दिस स्लॉटेड बार AP, ये जो स्लॉटेड बार AP है वो पॉइंट A के अबाउट रोटेट हो रहा है, इसलिए AP1 इज इक्वल टू AP, ओके, दैट्स वाई वी आर रिटर्न लाइक दिस। नाउ cos ऑफ अल्फा बाय 2 की जो वैल्यू है वो क्या होगी, सी अल्फा बाय 2 वैल्यू कहाँ पे है, ये आपका ये एंगल है, सो दिस एंगल, दिस ये जो पूरा है वो अल्फा है, तो इसका जो हाफ है वो कितना है, अल्फा बाय 2, ओके। तो हमने कभी cos ऑफ अल्फा बाय 2 की वैल्यू कैलकुलेट की, cos ऑफ अल्फा बाय 2 कभी हमने कैलकुलेट किया तो उसका वैल्यू कितना आएगा, तो cos क्या होता है, इट इज द एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस, सी इसका दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल बिकॉज हैविंग द 90 डिग्री, ये जो एंगल है, ये जो ट्रायंगल है ACB1, ये राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि इसका एक जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो cos ऑफ अल्फा बाय 2 क्या होगा, इज एडजेसेंट साइड, सो AC, एडजेसेंट साइड कौन सी, AC अपॉन हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस क्या है, AB1, नहीं एडजेसेंट साइड कौन सा है, CB1, एडजेसेंट सॉरी एडजेसेंट साइड है आपका CB1, और हमेशा जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसमें जो 90 डिग्री का एंगल है उसके सामने की साइड हाइपोटेन्यूस होती है, तो वो क्या होगा, AC, दैट्स व्हाई इट इज अ CB1 अपॉन AC। नाउ वी नो CB1 इज इक्वल टू CB, ये जो CB1 है, CB1 इज इक्वल टू CB इज इक्वल टू CB2, बिकॉज ये जो पूरा सर्कल है, ये जो CB1 है CB है सब उसके रेडियस है, दैट्स व्हाई ये ऑल रेडियस आर इक्वल, दैट्स व्हाई CB1 इज इक्वल टू CB। तो इसी तरह से ये फॉर्मुलेशन आता है। सो वी विल स्टॉप हियर, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके न्यूमेरिकल देखेंगे जो वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं। थैंक यू, जय हिंद।